Good evening, friends. Jai Hind. Today we will be discussing the second part of the preamble, and I will be trying to finish off the second part and the preamble itself, the whole of the preamble in this lecture only. We will be speeding up. This is Manish Kumar, and I'll be basically discussing about the questions which are being framed from the concept of the preamble in your competitive exams. Not only in your competitive exams, but if you look at your ninth class political science book, in that book also you will find there is a mention and there is a description of your preamble. So in the first part of the preamble or the video which was there, we recorded on the for the first part, we have discussed mainly two sources or mainly the two important thing about that is what is the source and what is the nature of the state. Source, the people of India. In the nature, we described Indian state as your sovereign, socialist, secular, democratic and republic. उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ वी विल बी फर्दर गोइंग एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट important concept of what is the aim of this constitution, which is basically described. That is, let's say there are different aims mentioned. That is justice. The first thing that is mentioned is justice. What sort of justice we are looking for? Basically, when we are talking about justice, it is definitely of different type: political justice, economic justice and your social justice. What do we mean by that? क्या मतलब है इस चीज का? क्या मतलब है सोशल जस्टिस का? क्या मतलब है इकोनॉमिक जस्टिस का? क्या मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस का? दैट सिंपली मीन्स कि इन इंडिया justice will be above everything. Justice will never be deciphered according to your economic status. Justice आपके सोशल स्टेटस को देख करके डिवाइड नहीं होगा. आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, justice will be served to you. If you have committed a crime, you will be punished. If you are a victim of something, then also proper justice will be there. So justice, then comes the liberty. The other thing is liberty. What sort of liberty we are talking? हम किस liberty की बात कर रहे हैं? हम liberty की बात कर रहे हैं liberty of thoughts, of faith and worship. Liberty, लेकिन किस चीज की liberty? अब ये बताओ, liberty of thoughts, liberty of speech, but can you speak anything or can you speak anything you want? Can you speak about something negative about the nation? How much liberty is given? Liberty comes with certain limitations. You are liberal, but there is no complete freedom. It is liberty justified in nature. Liberty justified in nature. So liberty, undoubtedly liberty, then comes your equality. What sort of equality we are talking about? Equality, you cannot live in a state or live in a country where equality is not there. But in India, your fundamental rights are there. Your even DPSP में भी equality की बात की गई है. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आपका फंडामेंटल राइट फर्स्ट जो है वो राइट टू इक्वलिटी है. तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो यही कह रहा है कि भाई दिस इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली एंड वेरी ब्रीफली described in preamble of the constitution itself. Then comes your fraternity. Fraternity, that simply means that you have to, undoubtedly we have to maintain the integrity of the nation. We have to maintain the brotherhood, commonhood in the nation. See, हमें ये पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और the country itself is home to different religions, different your
different sects, different castes, different, you can say, there can be discrimination on the basis of class as well. But fraternity says, या fraternity ये कहती है कि we have to maintain brotherhood, we have to maintain commonhood, and we should not basically in our acts or any of the in any of the case, we should not basically destroy the integrity and fraternity of the nation. So constitution itself is trying to achieve the fraternity and integrity for the nation. Now coming on to the other part, that is this preamble is ending with a simple statement that on this 26th November of 1949, तो बेसिकली अडोप्ट कब किया गया, दिस इज टेलिंग यू द अडोप्टिंग डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अडोप्ट कब हुआ, दैट इज 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. अब देखो कई बार ये बात आई, जैसे इन द ईयर 1960, देयर वाज अ केस, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, वेदर preamble is a part of constitution or it is not a part of constitution, whether preamble can be amended in the same manner as the constitution is being amended or constitution can be amended. So in the Berubari case, Supreme Court held that no, that is in Berubari case, Supreme Court said no, preamble is not a part of our constitution. But in Keswanandan Bharti case, that is 1973, Keswanandan Bharti case, Supreme Court reversed its earlier verdict and said yes, it is a part of constitution and it can be amended in the same manner as it was amended or as the constitution is amended. तो अभी तक अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को केवल और केवल अगर हम बात करें तो केवल और केवल अभी तक एक ही बार क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, एंड दैट वाज बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 1970 या अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो आपको दे देंगे बेरूबारी केस, केशवानंदन भारती केस, देन आपको दे दिया मान के चलिए कि अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट, देन आपको दे दिया मे बी अनदर केस. तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पता होना चाहिए. सबसे पहले बेरूबारी केस है. बेरूबारी केस का क्या निर्णय था कि भाई प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद अगर हम बात करें केशवानंदन भारती केस में, तो केशवानंदन भारती केस में क्या निर्णय आया, केशवानंदन भारती केस में आया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें LIC ऑफ इंडिया केस 1995, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो याद रखना इन चीजों को, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं. उसके अलावा भाई कब इसको जैसे क्या क्या चीजें हैं, सोर्स क्या है, सोर्स हमने बात की, सोर्स कौन है, सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया. नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट है इट इज सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक. ठीक है, एंड रिपब्लिक. उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द basically yes, aim of the constitution. So aim of the constitution is to have a state that to provide the citizen justice, equality, liberty and fraternity. Then we come across the date of adoption. Date of adoption as mentioned, it is date of adoption is mentioned is your basically 26 November. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.